नायक हरमना भील। सुबेदार म्यूजिशियन रजत। स्क्वाड्रन लीडर स्क्वाड्रन अमित भट्ट। लीडिंग लॉजिस्टिशियन अब मैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और तीनों सेना के कंटिंजेंट्स से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! नहीं रेडी साहब। यस सर। सर ये फ्लैग पास में चाहिए थे सर। नहीं एक और बंदा
Bastille Day parade. How was the overall experience? It was amazing. It was enthralling in the terms that we marched on the foreign land in front of our own Prime Minister and the President of that state. So the moment we stepped and we started marching, that cheering from the crowd, it was echoing in our ears. And the moment we crossed the main dais and saluted our Prime Minister, and we saw the radiance that was emanating from the center stage, it got us so thrilled that our entire contingent was, at full josh when we marched in front, and it was an amazing experience for all of us. Tell us about the preparation. When did you get to know you are going to participate in Bastille Day parade? Indian Prime Minister is also there. So we got to know that we'll be part of Bastille Day parade about a month before we left. So we started the practice. All of us gathered at Delhi, and we started the practice for 3 weeks. We did a similar pattern practice. After that, we left for France, wherein all the coordination and practice was coordinated by the French army. So they showed us all the procedures, and they showed us all the format of the parade. So all that was coordinated by them, and we practiced with them for another 4 to 5 days. And then finally we performed on the Bastille Day parade after this one. Ma'am, how was the atmosphere of the event? You are one of those women, highly decorated officers who led the contingent in France. So I've been the part of the same contingent during the Republic Day parade this year. So it has been a very, the camaraderie between the entire contingent has been really good in terms that we've already been together before. So so this time when the coordination part came and when it came to marching, we were all together already. So it made it a lot more easier for me and for my fellow officers in terms that to gather everyone, gather everybody's courage and gather everybody's wit together and to stay together. So all of us were on the same page in terms that we've had sufficient practice. All that is left to show our demeanor and to show our parade on the foreign land. There is a picture going viral on social media, Second World War, that picture exactly if I put. In that picture, Indian soldiers are there, and now the contingent goes to France. People are comparing Second World War Indian contingent to now Indian contingent. How would you say? So I am 2009 was way before even I got commissioned in the service. So that time the media presence would have been less, but the interactions I've had with the people who are there, who have done this before, I'm sure it was the same then. But since it was not known much to people, since the exposure was not much, this time we have that, and it is at least conveyed to us from multiple levels and multiple angles that people are thrilled about our performance and they are very supportive of it. So that way, the two-way communication has been complete this time. So I'm sure it was a very good experience then and an amazing experience this year as well. Ma'am, my last question to you. In Maniksur Center, today Manoj Pande sir is here. He boosted up your confidence and your unit confidence. How do you know? This is a very warm welcoming for us. We've had a really grueling 10 days in terms that our schedule was really hectic with a lot of ceremonial things and parade preparation and everything including. So the day we've come here, today is the day we landed. We landed here at about 2:30 in the morning. So when we got the message that Chief of Army Staff will be receiving us and in terms that he'll be congratulating us, this was that was a extremely satisfying moment that we've been received by our own troops in a very well by the extreme Chief of Commander of Army himself. So it's a very honorable moment for all of us here. ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हम पहले से प्रैक्टिस भी कर चुके थे बैस्टिल डे मतलब फ्रेंच जाने से पहले वहां पे जाके हमने एक हफ्ता और प्रैक्टिस भी किया. फ्रेंच जो आर्मी नेवी एयरफोर्स और बाकी उनके बहुत सारे फोर्सेस के साथ इंटरेक्शंस हुए. हर दिन कोई ना कोई ऐसे आके हमें बोलते थे कि आपकी परेड के बारे में बोलते थे, आपकी बाकी सर्विसेज के बारे में बात करते थे. तो इट वाज अ रियली गुड क्रॉस कंट्री क्रॉस सर्विस इंटरेक्शन आई वुड से. कितना मुश्किल था मैम प्रिपेयर करना, कितना टाइम लगा आप लोगों को कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंटरनेशनल स्टेज पे? तो प्रिपरेशन हमारा पूरा रहा. 1 महीने पहले से हम प्रिपेयर कर रहे थे. 3 हफ्ते हमने मानिकशा परेड ग्राउंड में प्रैक्टिस किया सारे तीनों सर्विसेज को साथ में. तो हम जब फ्रांस पहुंचे थे हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे
वहाँ पे उनके प्रिपरेशन और उनके प्रोसीजर के हिसाब से हमने अडेप्ट करने के लिए सिर्फ 1 दिन लगा, और लेकिन हमारे प्रैक्टिस तो पूरा रखे थे हमने, पूरे हफ्ते हमने प्रैक्टिस किया, एंड जो हम पहले से कर रहे थे वो ही कर रहे, तो इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड वेल नोन प्रोसीजर टू अस, तो हमें मुश्किल तो नहीं लगा, बट प्रैक्टिस वाज फुल ऑन। पिक्चर वायरल हो रही सोशल मीडिया पर जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की है, जिसमें इंडियन सोल्जर्स हैं, उस फोटो को इस बार की जो फोटो है इंडियन कंटेंट उससे कंपेयर किया जा रहा है। प्लस मनोज पांडे सर ने आज आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस करा, आप मिले भी आपसे आर्मी की ओर से। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन आर्मी ने पार्ट लिया था, तो तब उनका उनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा है। इस बार तीनों सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें पार्टिसिपेट किए, तो ये अलग से ही अपने लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। तो इस हिसाब से जो हमने आज प्रेजेंट डे में हमने उस पे कंट्री को वहां पे रिप्रेजेंट किया, इट इज एन ऑनर फॉर अस, एंड इट इज आई एम श्योर इक्वल रहा होगा जो तब की बात, एंड फॉर नाउ वी ऑल्सो डन रियली गुड। 25 ईयर्स से इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है उसको लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा। ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, आई फील दे वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, और इंडिया और फ्रांस का जो 25 ईयर्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था उसे सेलिब्रेट करने के लिए आई थिंक ये एक चेरी ऑन टॉप ऑफ केक की तरह था। एक जरूरी सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय गस्ता सेना का जो गया था फ्रांस, उसकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंपेयर किया जा रहा है उसको कैसे? जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो फोटो है बैस्टिल डे परेड का 1916 में हमारी पंजाब रेजिमेंट के ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस इमेज को हम यहाँ पे देख कर गए थे, हमारे साथ लेकर गए थे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जो हमारी आपने परेड की जो लेवल देखी है, जो जोश का लेवल था, वो इतना हाई इसी वजह से था क्योंकि हमने ये पूरी परेड जो है एज ए ट्रिब्यूट हमारे पंजाब रेजिमेंट के जो एंसेस्टर थे उनको डेडिकेट की थी। कितना सर आप लोगों को समय लगा पूरा ये परेड किया था? प्रिपरेशंस के लिए कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? हमने मेन प्रिपरेशन जो है रिपब्लिक डे परेड 2023 के लिए किया था, जिसमें हमने 3 महीने की प्रिपरेशन की थी। रिपब्लिक डे 2023 में जब हम बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट आ गए थे, फर्स्ट आ गए थे, तो हमें फिर से जब इसका मौका मिला तो जून के महीने में हम वापस से दिल्ली में इकट्ठा हुए, और हमने जो है यहाँ पर एक 15 to 20 डेज का यहाँ प्रैक्टिस करके फिर हम पेरिस फ्रांस में गए थे। मनोज पांडे सर ने खुद आज आपको यहाँ पे रिसीव करा, तो जैसे बातचीत करी 1-to-1 में, किस तरह का एक्सपीरियंस है? ऑनरेबल मोमेंट, एक बहुत ही बिल्कुल प्राइड से भरा हुआ मोमेंट है मेरे लिए और मेरे सारे ट्रूप्स के लिए, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी वर एबल टू परफॉर्म। जो भी हमसे एक्सपेक्ट किया था हम उससे अच्छा परफॉर्म कर पाए। एटमॉस्फेयर कैसा था सर पूरी यूनिट का? किसका एटमॉस्फेयर कैसा था सर पूरी यूनिट का, बाकी अदर्स रेजिमेंट का? ड्यूरिंग द परेड, ड्यूरिंग द परेड जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो जोश था वो बहुत ज्यादा हाई था, और हम एक ही लक्ष्य के साथ गए थे कि यहाँ पर दिखा देना है फ्रांस में एंड पूरी दुनिया में कि पंजाब रेजिमेंट का लोहा क्या है। The overall experience was absolutely amazing. We had an amazing opportunity to be able to march in front of our own honorable Prime Minister, that too on foreign land. Nothing can be bigger than this. And the fact that we were able to pay tribute to our ancestors of my regiment through this parade, it is one of the most emotional as well as a moment that is full of pride for us. On social media, 1916 First World War photograph has been compared to the current contingent goes to France. How would you? I feel that it is a once in a lifetime opportunity, and the fact that we were able to do the thing that our ancestors did, and receive a lot of good appreciation from everyone for it. There's nothing more than that. How you prepare for Bastille Day parade? Is there any special preparations for it? Yes, we went through a special training, and we had prepared for Republic Day Parade 2023, and also we had come here in the month of June. We had 15 to 20 days of training before going to France. My last question to you today, Manoj Pande sir has received you and talked to you. How would you look at it? It's an honorable moment for you and your unit. Yes, it is a moment that is full of pride for me and my entire regiment, and we are very happy to be here. The experience was very unique. It was very exhilarating.
to march down the Champs-Élysées as part of Bastille Day parade, which is the oldest and the largest military parade in Europe. To not just march for the parade. You have participated in Bastille Day parade. How was your overall experience? It was the 25th anniversary of India-French relationship. It was a momentous occasion. As you said, it was the 25th anniversary of Indo-French strategic partnership. To mark that with marching down the Champs-Élysées for Bastille Day parade, which is Europe's largest and oldest military parade, was a great honor. And not just to march, but to open the parade was indeed an experience that I, on a personal level, and I have spoken to my men, we will cherish for the rest of our lives. When did you get the preparation for the parade? So we actually had been practicing for about a month before the parade started. So we started practicing in June itself. Most of the people who've marched, both from the Army, Navy as well as the Air Force, are the same personnel who've marched for the Republic Day parade as well. So they're very well crewed up. Their drill was fantastic, and the same was reflected on the final day as well. Indian Prime Minister as well as his counterpart from the France talked with you. We have seen some visuals, but we chat with you and how The president thanked us for what was a fantastic show of drill and parade, and thanked us for participating in that. And the Prime Minister, obviously, that was not the first interaction. The Prime Minister actually spoke with the entire Indian diaspora in France the day before. They were basically thankful to us for participating and putting on a very good show for the parade. So how was the... It was very, very exhilarating. The josh was very high. Both me and my officers and men, they knew the gravity of the situation, so to say, and how momentous the occasion was. And so we rose up to the challenge, and it was held by the lot of support that we got from the French people, both before and during the parade. On social media, there is a photograph going viral, and people are comparing. That photo was from 1916 First World War. They are comparing with the non-Indian contingent. How would you look at it? I don't understand what's there to complain. No, they are comparing. Comparing, okay. No compare. I thought complaining. No, that photograph is of course a very, very famous photograph in which a lady is, I think, putting a rose on the chest of a Sikh warrior who was from the Punjab Regiment. And it's almost like a, coming full circle. It's only apt that it was the Punjab Regiment that represented the army in this year's parade. So it is fantastic. My last question to you today, Manoj Pande sir has received you and worked with you personally. How was the overall experience? It was a great experience. We have only got positive response. Everyone who's met us has seen the parade live on television, and they have just given us the feedback that the parade was flawless. So we are happy for that. Thank you so much. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था. माहौल तो बहुत ही बढ़िया था वहाँ पे. बैस्टिल डे परेड एक तरह से बोल सकते हैं जैसे इंडिया में रिपब्लिक डे परेड होता है, वहाँ पे बैस्टिल डे परेड होता है. उनका नेशनल डे है जिस दिन एक मिलिट्री परेड होती है. तो उस परेड में भाग लेना, और न सिर्फ भाग लेना लेकिन उस परेड को खोलना, भारतीय सशस्त्र सेना के जो प्लाटून थे वो सबसे आगे चल रहे थे उस परेड में. तो एक बहुत ही दुर्लभ ऑनर है हमारे लिए कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया. माहौल बहुत ही अच्छा था. हम लोग वहाँ पे 10 दिन के लिए थे, तो उसकी प्रैक्टिस तो 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वहाँ पे हम 10 दिन के लिए थे. हर सुबह प्रैक्टिस करते थे अपने फ्रांसीसी काउंटर पार्ट के साथ, एंड जोश बहुत हाई था. वहाँ के लोगों को पता था कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, आके हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे. सो बहुत ही बढ़िया माहौल था. सर, आप लोगों को पता लगा कि बैस्टिल डे परेड जो है उसमें पार्टिसिपेट करने लगा, प्रिपरेशंस आप लोगों ने कैसी, कुछ स्पेशल चीजें भी तैयार की थी आपने? लगभग मई के एंड में या जून के शुरुआत में हमें पता चला था. तो लगभग 1 महीने का प्रिपरेशन हमने किया. कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया था, बिकॉज ड्रिल तो सबकी बहुत ही अच्छी थी. थोड़ी बहुत जो परेड में स्लाइट डिफरेंस होते हैं, बस वो था. वो छोटा सा फाइन ट्यूनिंग हमने आखिरी टाइम पे कर लिया था. एक फोटो सर काफी दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है 1916 की वो फोटोग्राफ है, जी. वो कि इस बार का जो इंडियन कंटिजेंट रहा है उससे कंपेयर किया जा रहा है. कैसा फील होता है?
बहुत ही अच्छी फोटो, वो फोटो मैंने भी देखी है। असल में 1916 में जो वो थे वो भी पंजाब रेजिमेंट के थे जो पहले वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, और एक तरह से एप्ट है कि 2023 में जो आर्मी का कंटिजेंट टेक पार्ट कर रहा है वो भी पंजाब रेजिमेंट का था। तो एक तरह से वो फोटोग्राफ रिक्रिएट की गई है एंड बहुत ही अच्छा लगा मेरे को फोटो देख के। आखिरी सवाल सर आपसे, सीडीएस सर मनोज पांडे सर ने आज आप लोगों को यहाँ रिसीव करा, आप लोगों को मैसेज भी दिया, किस तरह से आप देख रहे हैं सीडीएस सर से मिलकर क्या सर? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पांडे ने असल में वही चीज बोली जो हमको हर किसी ने बोला है फोन पे और वापस इंडिया आके भी, कि उन्होंने परेड देखी लाइव टीवी पे, और वो बस ये बोलना चाहेंगे कि परेड तीनों सर्विसेज की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एकदम फ्लॉलेस थी, एक भी गलती नहीं थी, और ये बात सुन के मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद। एक साल का गैप इन दोनों। अच्छा, तो वो फोटो दिखता है एक्चुअली वो मार्चिंग का है। उस समय ऐसा सेरेमोनियल इवेंट नहीं होता था, बट वर्ल्ड वॉर के बाद वो मार्च करके वहाँ से गुजरते थे। हाँ, गुजरते। एक लेडी है फ्लावर जो दे रही है वो ले फ्लावर हाँ, वो फोटो उसी का है जो दिख रहा है इंटरनेट पे।